Yeah, Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and in good health. Today we are going to start a new topic related with multiple integration. The name of the topic is triple integrals over a rectangular coordinate system. Let me give you some review related to the last lecture. We have studied volume by using polar coordinate system. We have integrated some of the questions related with polar coordinate system. We sketched some of the regions related to polar coordinate system. We studied how to convert polar coordinate system from rectangular coordinate system. In today's topic, we will study triple integration, properties of triple integrations, and we will solve some of the questions related to triple integrals, and we will also calculate volume by using the concept of triple integration. Volume initially represented by dV equals to multiple of three lengths, length, width and height, following the concept of sum, which is the basic of integration. First, we will find the data related with one of the patch, where this is the volume of that patch. If we consider this as a small patch, dx, dy and dz इसकी तीन लेंथ्स हैं for any one point xk, yk, zk. f उस पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. अगर इस तरह के डिफरेंट पैचेस बनाए जाएं और टोटल n नंबर ऑफ पैचेस बनाए जाएं किसी भी ज्योमेट्री के अंदर, किसी भी ज्योमेट्री को n पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और सम किया जाए, ये वो बेसिक थीम है इंटीग्रेशन की. नाउ इफ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑन दिस इंटीग्रेशन, ऑन दिस थीम, व्हाट वी गेट इज दिस इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन हमें क्या कहती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देन उन्हें सम अप करें, हर एक को इंडिविजुअली सम अप करें, देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली फुल डाटा रिगार्डिंग टू दैट ज्योमेट्री. ये बेसिकली थीम है इंटीग्रेशन की. जस्ट लाइक integral is equals to sum of the function where the limit n approaches to infinity. इंटीग्रेशन उसी तरह का एक लीनियर फंक्शन है जैसे डबल इंटीग्रल होते हैं, जैसे सिंगल इंटीग्रल्स थे. इफ वी आर हैविंग एनी कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाता है. इंटीग्रेशन का कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती. सेम इज द केस इफ यू हैव टू फंक्शंस, whether they are having प्लस साइन और दे आर हैविंग माइनस साइन, इंटीग्रल्स दोनों के ऊपर सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिपेंडेंटली. इफ यू आर हैविंग अ फंक्शन f dv, you can split this function into two different geometries if the sum of this geometry is same as that of g. ये भी वही काम है जो आप सिंगल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल्स में कर चुके हैं. Venus theorem. If you are having domain of x, domain of y and z for any surface, then you can write the integral. This is the volume basically, d of v. Volume has 6 options, dx, dy, dz and many other. इन 6 ऑप्शंस को यूज करते हुए यू कैन राइट द इंटीग्रल. यू कैन z की लिमिट पहले नंबर पे आएगी, सेकंड नंबर पे dy की लिमिट आएगी और थर्ड नंबर पे x की लिमिट आएगी. जब मैं 1 2 3 काउंट कर रहा हूँ तो 1 2 3 यहाँ से काउंट हो रहा है. द वन क्लोजेस्ट टू द फंक्शन इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3. Now let us move towards some of the basic questions related with triple integrals. Exercise is 14.5. The question
और क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है हमारे पास dx dy एंड dz, वी जस्ट हैव टू इवेल्युएट। फर्स्ट सॉल्व करने का जो पैटर्न है एक दफ़ा उससे रिव्यू कर दूँ। हम x से इंटीग्रेट करेंगे, जो आंसर आएगा उससे y से इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे z से इंटीग्रेट करेंगे। ये मेरे पास x की लिमिट्स हैं, ये y की लिमिट्स हैं और ये z की लिमिट्स हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर, इंटीग्रल व्हेन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करना है आपने। जब अलग अलग आप इंटीग्रेट करेंगे तो x square will be x cube by 3, y square will be just like y square x, क्योंकि y को एज अ कांस्टेंट डील कर रहे हैं और z भी एज अ कांस्टेंट ही डील हो रहा है। So it will be simply y square x plus z square x। लिमिट अप्लाई करने का पैटर्न क्या होता है, पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x लिखा है पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस द होल फंक्शन विद लोअर लिमिट, you will get this point. Now we will integrate with respect to y following the same procedure। जहाँ पर constant function होगा simple y आ जाएगा, y cube by 3 and it will be z square y। Applying the limit by following the same procedure, upper limit minus the lower limit, you will get this as a result। Now integrate with respect to z and applying the limit, just a small algebraic kind of operations plus minus करेंगे, you will get your answer। Next, a simple question with simple geometry is a rectangular type, कोई भी वेरिएबल शामिल नहीं है। We have dv as the differential in integration। इसको आप solve, you can write it as dx dy dz, or you can write it as d of y, d of x, d of z, या आपके पास वो जो 6 ऑप्शंस थे उनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। Here we apply dz, dy and dx। This is the function। लिमिट सारे की क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट लिमिट्स लिखेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, you will get, again you will get z 4 by 4, that means it is something like 12x y square, z 4 by 4, applying limit 0 to 2, we have two more integrals, this is 0 minus 1, this is 2 and 3, and the remaining integrals are पहले y है फिर x है, this will be 3, and after applying the limits we will get this। Then we will integrate with respect to y, apply करें limits, then we will integrate with respect to x, apply करें limits, you will get your answer। Let us solve one more example related to triple integral, जिसमें dz पहले नंबर पर है, dx और dy functions हैं। We have function is z। First we will integrate z with respect to dz। We will find power rule। by applying the power rule we will get z square by 2, upper limits minus the lower limit, following the same procedure of integration। जो आंसर आएगा उससे हम x से इंटीग्रेट करेंगे, x, जो आंसर आएगा फाइंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, applying the upper limit minus the lower limit, you will get your answer। In this question you have dz, dx, dy। normally जितने भी questions लिए हैं सब में dz is considered as first variable। x cos of y, when we are integrating with respect to d of z, at that time the whole function is dealt as a constant function, trigonometric function है, थोड़ा ज़्यादा explain कर दूँ। d of z we will have only z integrating
after integrals apply the upper limit minus the lower limit. Now we have x cube, this x is converted in terms of x cube. अब जब आप x से इंटीग्रेट करेंगे you will get x 4/4. Apply the limits, then finally integrate with respect to y. Finally, after applying limits, you will get 1/4 root of 2. सिंपल से क्वेश्चन हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो को ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़े. वॉल्यूम, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको जब हम लोगों ने एरिया बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल्स एक्सप्लेन किया था तब भी ये डील की थी. ये देखा था बात कि बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल हम लोगों ने इनिशियली डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि डबल इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम. मगर जब हमने ये कहा कि इफ द फंक्शन इज कंसिडर्ड एज 1 then this volume is same as that of area. In the same is the case with the triple integrals. You want to calculate volume by using the concept of triple integrals. Just what you have to do is this function जो कि 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट था, इस फंक्शन को आप अगर आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे then you will get this triple integral same as that of volume. ठीक हो गया. अब ये कॉन्सेप्ट लेके आगे चलते हैं. Find the volume of a solid G shown in the figure. Figure shown in the figure means ज्योमेट्री आपके पास गिवन है. अगर आप इस ज्योमेट्री का जस्ट आप एक्स वाई एक्सिस का पोर्शन चेक करते हैं, दिस इज एक्स वाई एक्सिस जिसमें x की वैल्यू 2 है, जस्ट लाइक हियर द वैल्यू ऑफ x इज 2, द वैल्यू ऑफ y इज, दिस इज y, द वैल्यू ऑफ y इज 1. अगर वैल्यू ऑफ x 2 है, वैल्यू ऑफ y 1 है, यू कैन राइट इट लाइक दिस. हम इस पॉइंट को बड़ा आसानी से ट्रेस कर सकते हैं. दिस इज द पॉइंट वेयर x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2. ये हमारे पास सारा पोर्शन बन जाता है. नाउ dv can be written as d of z, d of a. d of a को हम अपनी मर्जी से कर देते हैं as dy dx. फंक्शन के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर आप देखें z की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1 minus y. दिस इज द बेसिकली हाइट इन ऑन z साइड. ये उसकी z इज इक्वल टू 1 minus y है. सेम इस केस अगर आप यहाँ पर देखें तो x एक्सिस के ऊपर मैंने आपको ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैंने आपको ये कहा था एट एक्स वाई प्लेन वी हैव द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 0. सो द लिमिट ऑफ z विल बी फ्रॉम 0 to 1 minus y. उससे ऑनवर्ड अगर हम चलते हैं तो x is very simple from 0 to 2, y is very simple from 0 to 1. हमारा integral complete होता है. After completing the integral, you have to follow the same steps as in the last question. First integrate with respect to z, then y, finally with respect to x. Remaining part is very simple. The important part is you have to find the limits, and second more important part is that the function in this part is identity 1. Let us take one more example. Use triple integral to find the volume of a solid within the cylinder. This is the geometry of a cylinder. We are represented by in the form of a circle. इसकी equation एक circle की तरह given है. अगर z axis from negative to positive side है and find the plane z equals and between the planes z equals to 1 and x plus z is equals to जो geometry given है. This is the geometry. अगर सिर्फ आप x एक्सिस को मार्क करना चाहते हैं, दिस इज द x एक्सिस. अगर उसे अलग से लिख दें तो ये x एक्सिस xy प्लेन की ज्योमेट्री है. फिर xy प्लेन इज गिवन बाय दिस ज्योमेट्री. ठीक, z की दो लिमिट्स हैं. z की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है
दैट इज 1, और z जो अपर बाउंडेड है 5 माइनस एक्स से बाउंडेड है, सो इट इज सिंपली 1 to 5 माइनस एक्स। रहेगी बात dx dy की। dx dy को आप dx dy का मतलब होता है xy प्लेन। जब भी आप xy प्लेन की तरफ आएंगे, इनकी तरफ xy प्लेन के ऊपर आपके पास जो ज्योमेट्री गिवन है, इट इज सिंपली जस्ट लाइक अ सर्कल। क्योंकि सिलेंडर जो होता है उसके जो एजेस होते हैं वो एक सर्कल की तरह होते हैं। ये ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट कर ली। अब आपने यहाँ पर अगर इसे टाइप 1 के फॉर्म में लिखा है, टाइप 1 के फॉर्म मीन्स अगर आपने x को पहले दूसरे नंबर पर रखा है, y को पहले रखा है, तो यू हैव टू स्केच अ लाइन वर्टिकली इन अपवर्ड डायरेक्शन। द लाइन विल एंटर अ रीजन एट वन पॉइंट। रीजन में से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो कि ये लिखी हुई है। द लाइन विल लीव द रीजन। रीजन में जो y की वैल्यू है वो ये लिखी हुई है, दैट विल बी लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट फॉर द वैल्यूज ऑफ x। जो सिलेक्टेड रीजन है उसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू x की है वो और मैक्सिमम वैल्यू x की वो आप यूज़ कर लेंगे और अपना इंटीग्रल कंप्लीट कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट इज दिस सॉल्यूशन, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको खुद अटेम्प्ट करें। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ का हिंट देता चलूँ कि इफ़ यू आर हैविंग अ फंक्शन ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखिए ये वो फंक्शन है विच कुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यू कैन राइट x is equals to 9 theta, और by using this substitution और अपनी लिमिट्स को भी कन्वर्ट करें, इन दोनों को भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, यू विल गेट दिस एज आंसर। अब रूल अप्लाई हुआ है सिंपली, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो वी विल ऐड 1 इन इट्स पावर और फिर उसे से भी डिवाइड भी करेंगे। आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, आई होप सो कि हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। दिस इज अ समरी ऑफ द लेक्चर। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। Triple integral could be written in the form of, if we have different limits of each variable, we could write it as like this in any of the order. If you have z as the first variable, second variable आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. You want to write it as dx, dy. You can also write it as d of y, d of x. जैसा होगा आपकी अपनी चॉइस है. अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री यू कैन राइट द लिमिट्स. आप इस तरह लिखते हैं तो फिर इसके अकॉर्डिंगली लिमिट्स लिखेंगे, अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर इसके अकॉर्डिंगली लिमिट्स लिखेंगे. वॉल्यूम हैव स्टडीड टुडे. अगर फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिटी हो, इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम. देयर आर सम क्वेश्चंस, वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, कोशिश करें हर क्वेश्चन को सॉल्व करें. कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा. ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम से रिलेटेड. इन सब क्वेश्चंस के अंदर फंक्शन की वैल्यू आइडेंटिटी होगी. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.